Students, continuing with chapter number 5, that is poverty. And as I said in my previous e-class, that I'll continue with the indicators of poverty. Very first indicator in this e-class is provision of toilets. Now, students, according to the census report of 2011 in our country, 70% of the total population lives in villages. So we can say that maximum of the people in our country stay in villages, and we all know that they are more prone to waterborne and contagious diseases means जो एक से दूसरों को फैलती हैं. And इनको, दैट इज द पीपल स्टेइंग इन विलेजेस, इनको ये सारी बीमारियों से बचाने के लिए यस, क्लीनलीनेस इज मस्ट. And apart from that, the toilets should be there. Now in the table you can see the total facility of toilet within the house is 66%, whereas houses without toilet facility is 34%. So over here we can also say that 34% of the families have common toilets. Now over here there is lack of cleanliness, yes, there is pollution, so obviously this will affect their health. They will be physically weak, and so it keeps the production and productivity at low level. ऑब्वियसली बात है, अगर मैं ठीक नहीं हूँ या कोई भी इंसान जो आज काम करने जाता है, अगर वो ठीक नहीं होगा तो वो उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएगा जैसे एक्चुअली वो ठीक होने पे करता है. सो इट विल अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी, वो कम प्रोड्यूस कर पाएगा, उसको वेजेस उस दिन के कम मिलेंगे, एंड दिस विल increase the poverty in our country. Now the next indicator is housing. Yes, housing, हर इंसान चाहता है कि उसका घर प्रॉपर अच्छा होना चाहिए with all the facilities like tap facility, drainage facility, वरांडा उसमें होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, सारी फैसिलिटीज़ हम सोचते हैं कि एक प्रॉपर घर में होनी चाहिए. बट एज वी आर doing it in terms of indicators of poverty, students, over here we all know that in developing countries, yes, many people stay in slum area. Housing we all know, रोटी कपड़ा और मकान प्राइमरी नीड्स में आता है. Now, types of housing facilities decided, yes, decides the level of poverty. Now over here in any country, if there is lack of proper drainage facility, electricity facility, then that is not considered as a proper house. And in our country, yes, India lacks houses with full complete facilities. Over here members in a house are also included. अगर घर छोटा होगा, ज़्यादा members होंगे तो obvious है housing facility proper नहीं बताई जाएगी. In India 60 crores people have dwellings which are dangerous for their health and risky for their lives. Yes, it is dangerous for their health. 60 crores, good number. So most of the houses in India comprise of one room facility, which is one of the major measuring rods of poverty. Yes, housing, one of the major measuring rods of poverty. Now next we move on to electricity consumption. Now electricity is required everywhere, be it a company, be it a factory, घर हो, हॉस्पिटल्स हो, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती. सो वी कैन से दैट इफ अ कंट्री वांट्स टू प्रोग्रेस, देन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होना चाहिए और कंजम्पशन भी ज़्यादा होना चाहिए. So electricity, one of the major factors in the development of any country. Now to increase the production,
country and quality of life of people, electricity is must. Yes, quality of life improve करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कंजम्पशन अच्छा खासा होना चाहिए. नाउ वी ऑल नो इंडिया इज मेन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इतने सारे लोग रहते हैं, सो पॉपुलेशन अच्छा खासा है, सो ऑब्वियसली वी आर consuming good amount of electricity, but still because of high population and low per capita income, per person electricity consumption is very very less in our country. Next, I move on to education. Yes, very important one. Now, according to World Bank, people in age group of 15 years and above who can read and write are literate, and the rest are illiterate and they are mostly poor. Yes, this is the definition as per the World Bank students. Now over here, the people, those who are unable to get this facility are basically poor people. and जो इंसान educated नहीं होगा, जिसको ट्रेनिंग नहीं मिली हुई होगी बट नेचुरल है, वो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा जितना एक स्किल्ड लेबर कर पाता है. स्किल्ड लेबर कम टाइम में कम मतलब जो रॉ मटेरियल है उसको ऑप्टिमम यूज़ करके ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकता है, जबकि जो अनस्किल्ड होते हैं, जो अनट्रेन्ड होते हैं, उनको ज़्यादा टाइम लगेगा. तो जो इंसान ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा उसको ज़्यादा वेजेस मिलेंगी, जो कम प्रोड्यूस करेगा उसको वेजेस कम मिलेंगी. सो ऑब्वियसली यहाँ पे भी इनकम जो है कम मिलेगी. दैट शोज द पावर्टी. Now, इसके अलावा laborers get limited work opportunities and choices. Yes, वो पढ़े लिखे नहीं होंगे तो उनको इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, चांसेस, चॉइसेस, ऑप्शंस कंपैरेटिवली जो पढ़े लिखे हैं, जो स्किल्ड हैं, उनको उतना नहीं मिल पाएगा. एंड एज आई सेड, यस, इनके वेजेस भी लो होते हैं. नाउ in 2011, Brazil had 91% literacy rate, whereas in our country it was 74.04%, Nepal 60%, and Pakistan 55%. It shows, yes, this shows that in developing countries, literacy rate is comparatively very less. Yes, if I compare Brazil and our country, तो हमारे country में literacy rate comparatively कम है. We need to increase it. But yes, this is indicator of poverty. Low education among poor makes them conservative and less acceptable to the changes. Yes, we all know, जो लोगों को education इतना provided नहीं होता है, उनके thoughts जो हैं वो बहुत ज़्यादा orthodox, conservative होते हैं. नई नई चीज़ें वो इतना जल्दी अपना नहीं पाते हैं. High rate of ignorance is strong indicator of poverty. Now, only level of per capita income cannot give the right estimate of poverty in the world. Yes, ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की थी. A country with high per capita income can have high number of people below poverty line. Yes, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि if per capita income जो हम कैलकुलेट करना जानते हैं वो अगर ज़्यादा होगी, it means वहाँ पे उस कंट्री में जो है वो पावर्टी नहीं होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है. It means, yes, unequal distribution of income matters a lot, and this is our next indicator, students. Unequal distribution of income and poverty, and yes, obviously property का भी unequal distribution. Over here, unequal distribution in terms of, yes, as an indicator of poverty भी बताया गया है, and over here in terms of property भी मैं आप लोगों को explain करूँगी. Now, we all know 1991 में economic reforms आए थे हमारे country में. The economic reforms, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसके बारे में 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है. नाउ बिकॉज ऑफ दिस, नो डाउट द growth rate of our country and per capita income increased a lot, but unequal distribution of income, larger reduction in poverty
was not noticed. It means जितना हमने सोचा था कि unequal distribution of income जो है वो नहीं होगा, poverty reduce होगी, ऐसा उसका impact आया नहीं था. With increase in income inequality on one hand, yes, अगर income inequality increase होता है तो rich class जो है उसका standard of living बढ़ेगा, सारी facilities उसको मिलेंगी, जबकि दूसरी तरफ yes, जो लोग हैं जिनको कम इनकम मिल रहा है वो स्लम एरिया में रहेंगे, उन्हें बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं हो पाती हैं. एंड यस, यू कैन सी द टेबल स्टूडेंट्स ओवर हियर. हम लोगों को बताया गया है शेयर ऑफ एक्चुअल नेशनल इनकम टू टॉप 1% रिच क्लास इन आवर कंट्री as per the year 1998 was 9.0%, which increased to 12.6%, which is obviously not at all good. If you see other countries, so 15.2, 18.9 for US, whereas for UK it is 12.5 and 12.7. Somewhat similar दिखता है UK का, मगर इंडिया yes बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. So for India, it can be said that the advantage from economic reforms were more in favor of rich. Yes, इसने rich को ज़्यादा फायदा दिया है. So the disparity of income inequality is also one of the indicators of existing poverty. Yes, students. One thing again I'll say, unequal distribution of income and property है. Yes, ये in terms of indicators of poverty बताया गया है. But when you write the heading, when asked in examination, unequal distribution of income and property, you will write, students. Now, next I move on to high rate of unemployment. We all know our country, there is high rate of unemployment because the people, they are not educated, they are not trained, so they are unable to get the job also sometimes. So there is high rate of unemployment in our country. But first let us start with the meaning of unemployment. When people with working capacity and willingness to work at existing wage rate do not find the work, they are said to be unemployed. Yes, सामने वाले के पास कैपेसिटी है, उसकी इच्छा है, वो रेडी है काम करने के लिए, जो उसको पैसे ऑफर हो रहे हैं उस पे, बट स्टिल उसको जॉब नहीं मिल रहा है, इट मीन्स द पर्सन इज अनएम्प्लॉयड. नाउ लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट and jobless growth after 1991 resulted in less development and employment opportunities in comparison to increase in supply of labor is the main reason for increase in unemployment. Now, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतना हो नहीं पाया था जितना सोचा था. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज हुई थी, मगर जिस लेवल पे सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीज हुआ था उस लेवल पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज नहीं हुई थी, which obviously resulted into unemployment. Now, in a situation of unemployment due to lack of income, a person cannot fulfill basic needs of his family. Obvious सी बात है, उसके पास इनकम नहीं है या वो कम अर्न कर पा रहा है, एक्चुअली उसके पास इनकम नहीं है, तो वो इंसान अपने घर की जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो भी पूरी नहीं कर पाएगा, एंड ऑब्वियसली इट विल रिजल्ट इनटू पॉवर्टी. Now in India till 2011, the rate of unemployment remained around 9%. According to Labour Commission in the year 2013-14, the rate of unemployment among people 15 years and above is 4.9. In rural areas, this rate was 4.7% and in urban areas it was 5.5%. Students, once again I am saying, figures are important. So, with this, I'm done with my today's e-class. I'll continue with the same chapter, that is poverty, in my next e-class also. Yes, students. Thank you.